माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Now we take up item number 24 to 28 together. Sir, which number? Point of order? My point of order is under Rule 216 and also under Article 113 of the Constitution of India. Sir, just now we have received this much of documents. Really, how are we to read it? And just now we have got it from the publication counter. And for the time being, it may be applicable only to the Union Territory of Jammu and Kashmir. You mentioned 216. 216. But that is a scope of debate on supplementary grants. Yeah, that is the. Today morning I have read it already. It is on record. The sum and substance of Rule 216 is original grants shall never be discussed along with the supplementary demands for grants. If you want to discuss, then the Honorable Speaker has to suspend the rules under 388. Without suspending the rule 216, how can we have the discussion on the original grants as well as the supplementary demands for grants? Now, two supplementary demands for grants in respect of Union Territory of Jammu and Kashmir has already been placed before the House. That statement is before the House. And kindly go through Article 113 of the Constitution also. 113 of the Constitution is a constitutional right conferred upon the members of Parliament. And the country as such said, that is 113 says that procedure in Parliament with respect to the estimates. Clause 1. So much for the estimates as relates to the expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of the Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of the Parliament of any of these estimates. Even those estimates which were not being voted by the Parliament, even then those demands have to be placed before the House for the discussion. Because the House wants to know what are the receipts and what are the estimates. Even if I have heard that the BSc has already approved. Sir, my point is the Business Advisory Committee has no authority to float the rules. The rules are having paramount consideration. Ultimately, Mr. Honorable Member, ultimately, Business Advisory Committee, of course, takes decision. But the ultimate decision is taken by the Speaker. No, I am not questioning the direction or the decision of the Honorable Speaker. If the Speaker took the view, it's okay, fine. But no, your point has been taken. One thing that one more point. In this context, I would want to have one word said, if you permit me, sir. Yes. I'm not saying something which is done, which is against the law, which is against the rules of the House. We should repeat it if it was wrong. If it was wrong, it should not be done. I agree. But how is it in 2014? Yes. When Delhi government's National Capital Territories budget was presented, supplementary demands for grants was raised. That day, the same thing was allowed. The same thing was allowed. No. I knew this will come, and that's why I said, if wrongs were done earlier, we shouldn't repeat it. But it was not a wrong, and that was allowed by the chair then, is established. And therefore to say that was wrong, but you don't do wrong, itself is wrong. That time the chair allowed it. This time the chair kindly allow it is my appeal. And therefore to say that is wrong now, for a party which was in power and seated here at that time, is such a matter of shame. You'll do it, and the chair will allow it at that time, whereas it's not right now. How is that, sir? सभापति महोदय, मैं सुबह से अपोजिशन को सुन रहा हूं. ये रूल कोट कर रहे हैं सर, लोकसभा का कोट करें. हम लोग सभी लोकसभा के सदस्य हैं, रूल से बाइंडेड है. लेकिन जो भारत का संविधान है सर, यही बाइबल है, यही रामायण है, यही महाभारत है. इसका 357 और 118 यदि पढ़ ले हमारे दोनों बड़े अच्छे वकील हैं सर, प्रेमचंद्रन साहब और मनीष तिवारी साहब, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बहस की गुंजाइश है. 357 कहता है कि यदि लेजिस्लेशन जो है वो
फंक्शनल नहीं है तो पार्लियामेंट को अधिकार है। और 118 संविधान का आर्टिकल यह कहता है कि पार्लियामेंट को जल्दी इसको क्लियर कराने के लिए जो कुछ भी करना पड़े इमीडिएट करना चाहिए। फाइनेंशियल बिल के लिए पार्लियामेंट एकदम क्लियर है सर। ओके I have not finished. One more. 1 minute. One more. See, what is the hurry? I can't understand. And even I have gone through the demands for grants. let's not. Let me give my direction. Pardon? Let the chair be allowed to. No, demand number. General budget. Sir, demand number 5 is missing. Yes, it is in respect of Ladakh. But the House should know, because if we want to go through the and if while deliberating, sir, if any demand is missing, then it is to be re-serialized. It is. You want to say something? You cannot make a departure from fundamental rules. You cannot deprive me of my right to articulate my viewpoint, whatever is being presented. I am not being allowed. It is just a minute back this has been handed over to me. It is humanly impossible to go through it and to articulate my viewpoint and to say... That point has already been noted. No, but you cannot make a departure. I mean, it is true that Honorable Speaker has the authority, but this cannot be done. Okay. माननीय सदस्यगण, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन ने नियम 216 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माननीय सदस्य की तर्क है कि जम्मू तथा कश्मीर से संबंधित वर्ष 2022 और 23 के मूल मांगों के साथ वर्ष 2021 और 22 के अनुपूरक अनुदानों की चर्चा नहीं हो सकती है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय के तरफ से सदन को बताना चाहता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मांगे वित्त वर्ष के शुरुआत में पूर्व ही प्रस्तुत की जाती है और पारित भी होती है। संविधान के अनुच्छेद 115 में प्रावधान है कि यदि सभा द्वारा पारित की गई मूल मांगों द्वारा प्राधिकृत रकम और वर्ष के प्रायोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाने हैं अथवा किसी ऐसे नए सेवा पर जिसका अनुदान उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में न किया जा सका है, सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार ऐसी आवश्यकता हेतु परवर्ती सत्रों में अनुपूरक मांगों ली जा सकती है। जब ऐसे अनुपूरक मांग किसी सत्र में सदन के सामने लाई जाती है, उस स्थिति में नियम 116 एक निषेध करता है कि अनुपूरक अनुदानों पर बोलने समय सदस्य उन मूल मांगों पर चर्चा न करें जो सभा द्वारा पहले ही सामान्यतः बजट सत्र में पारित की जा चुकी है। अतः अनुपूरक मांगों पर बोलते समय सदस्य केवल उन्हीं मांगों पर बोलें जिनसे अनुपूरक मांग बनी है, सदस्य पहले ही पारित मूल मांगों की चर्चा में लाएं। मत संख्या 25 पर सूचीबद्ध मूल मांग आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रकम का प्रावधान करने के बारे में है, जबकि मत संख्या 26 पर सूचीबद्ध अनुपूरक अनुदान वित्त वर्ष 21-22 से संबंधित है। वर्ष 1921-22 की मूल मांगे ये सदन पहले ही 18 मार्च 2021 को पारित कर चुका है। मत संख्या 25 पर सूचीबद्ध आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मूल मांगों तथा मत संख्या 26 पर सूचीबद्ध अनुपूरक मांगों का परस्पर कोई संबंध नहीं है और इन पर एक साथ चर्चा करने से नियम 216 का उल्लंघन नहीं होता है। अतः मैं व्यवस्था के प्रश्न की खारिज करता हूं। माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे प्रक्रिया की संबंधित नहीं है। ये मुद्दा इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री जी इस विषय की जांच करवा लें। मिसिंग डिमांड नंबर 5, जो मिसिंग डिमांड नंबर 5, आप बता दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की बजट पर चर्चा उसके प्रस्तुत किए जाने के दिन ही हो रही हो। पूर्व में भी राज्य की बजट एक ही दिन प्रस्तुत किए गए हैं तथा चर्चा के लिए गए हैं। इसी प्रकार अनुदान की अनुपूरक मांगे भी प्रस्तुत किए जाने की दिन भी चर्चा में ली गई है। मिस्टर मनीष तिवारी। कई बार। Thank you very much, Mr. Chairperson. Before I commence the discussion on the budget and the demand for grants for Jammu and Kashmir, may I once again reiterate my objection that Rule 205 of the Rules of Procedure and the Conduct of Business of the Loksabha is a fundamental rule. It constitutes what could be called one of the pillars of the basic structure on which this temple of democracy runs. And so, therefore, it is my contention, Mr. Chairperson, and I asked for a ruling on it in the morning. It is not, it cannot be amended using, or it cannot be waived using the amending powers or the suspension powers of Rule 388. I would, in all humility, request the Chairperson, the Chair, that a ruling on this particular point, where the word used in Rule 205 is not may, it is shall, and there are no extraordinary exceptional circumstances why the debate has to be held on the same day as the budget documents have been tabled, and this, in my respectful submission, sets an extremely unhealthy precedent and may in future be extrapolated to situations which are far, far more serious than what we are confronting today. So, therefore, I would request that my objection be noted, Mr. Chairperson, sir. Number two, Yadav Sahab, I have requested for a ruling because in my estimation 205. I'm not Yadav Sahab, I am not yielding. मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, पर 388 में पावर स्पीकर को है, उसको अंडरमाइन नहीं करना। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो इस नियमावली का बेसिक स्ट्रक्चर है और मैं इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय से रूलिंग चाहता हूं कि क्या वो रूल जिसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है हाउस शैल नॉट डिस्कस can those rules be suspended? Why did you do it in 2014? That also you please explain. Well, you should have pointed it out in 2014. You were sitting here, you should have pointed it out. That is not an excuse. Mr. Parliamentary Affairs Minister, you were sitting here on these benches. If we were doing wrong, why didn't you point it out at that point in time? Honorable is that a defense? Sir, I'm sorry. That is not a defense. Sir, I would like to just say, you could have pointed out as one thing. No, he could have. Sir, let me say this. He could have pointed out as a very, very powerful line to say, but all of us will have to accept the chair's pronouncements. We followed that in 2014, forgetting that if you raise the question again, that the chair's ruling exists on this even as far back as 2014. The issue shouldn't have been raised at all. There is a precedent. Mr. Chairperson, sir,
I'm asking for a ruling. In fact, I didn't yield to the Honorable Finance Minister, but notwithstanding that, if she wanted to make her point, well, she has that discretion. But I would again like to reiterate before I start this discussion, Mr. Chairperson, that on this particular point, with regard to the budget, which is the sacrosanct duty of this House, can a violation of procedure in this manner be done? My second fundamental objection, Mr. Chair, and I would request you, please do not subtract this from my time. Jammu and Kashmir is not the only union territory in this country. Jammu Kashmir कोई अकेला केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं. चंडीगढ़ भी है, लक्षद्वीप भी है, दमन और दीव भी है. तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी सत्ता पक्ष से ये जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर इस सदन में अलग से चर्चा कैसे हो रही है और क्यों हो रही है? अगर आप ये परंपरा डालना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो बजट हैं उनकी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए, तो फिर तो सारे केंद्र शासित प्रदेशों के बजट की होनी चाहिए, फिर चंडीगढ़ के बजट की भी होनी चाहिए, फिर दमन दीव के बजट की भी होनी चाहिए, फिर लक्षद्वीप के बजट की भी होनी चाहिए. ये जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर अलग से चर्चा क्यों हो रही है? ये अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का विषय है और इसके ऊपर भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि चेयर की तरफ से इसके ऊपर कोई ना कोई रूलिंग दी जानी चाहिए कि क्या ये परंपरा अगर हम डाल रहे हैं तो अगली बारी हर केंद्र शासित प्रदेश के बजट की चर्चा इस हाउस में होगी. मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसका स्वागत करता हूं, बट देयर कैन नॉट बी डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स. रूल्स नीड टू बी अप्लाइड इन अ यूनिफॉर्म मैनर. एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, द रिकॉर्ड शुड बी क्लियर. सस्पेंशन ऑफ रूल 205 has been agreed by the House and not only by the Speaker. That was first approved here in the House. No. We asked for a division which was not allowed. Therefore, it is for the House to take a view whether any rule is to be suspended or not. When any such motion for suspension is brought before the House by Honourable Minister or any other member, subject to permission of Honourable Speaker. And the other point which we want a ruling, I think the matter is clear now. The House functions not only by rules and directions, House also functions on precedents. And many a time, we have a rules committee. Rules committee can consider if there is some difference during implementation of certain rules, then the rules committee will take cognizance of it. So in that respect, I believe what is being raised by Honourable Member Mr. Tiwari can also be deliberated in the rules committee. But final say is of Honourable Speaker and also of the House. Budget of Union Territories, I would just like to mention here, without legislature, is included in demand for grants of the Union Ministry of Home Affairs. I think that settles. Let us start this. नहीं, सभापति महोदय. Okay. नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं. मनीष जी सीनियर मेंबर हैं और मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं. मतलब जब वो अपनी सरकार में भी थे तो कई एक बार उन्होंने जो देश के लिए जेन्युइन चीज थी वो उठाया, इसलिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं. संजोग से हम दोनों साथ ही इस पार्लियामेंट में आए. मैं ये देख रहा हूं पहली बार, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मनीष तिवारी जी कह रहे हैं सभी रूल का जो अंतिम जिस्ट है सर 389, जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि वो स्पीकर को इस सभा को संचालित करने के लिए सारा अधिकार देता है कि स्पीकर सारे रूल को, सारे कानून को स्थगित कर सकते हैं
और 389 के बाद यदि स्पीकर की रूलिंग आ गई है, फिर इसके ऊपर चर्चा कहीं से मैं उचित नहीं समझता हूं। ठीक, ओके, थैंक यू मिस्टर तिवारी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि मुझे 12:45 पर ये जो बजट के कागज हैं ये प्राप्त हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आइंस्टाइन भी चाहते तो वो 1.25 घंटे में इस सारे जो बजट के दस्तावेज हैं, शायद 7 किताबें हैं, उनको अपने संज्ञान में ले पाते। और मैं अपने आप को कोई आइंस्टाइन नहीं मानता हूं, और इसलिए I would like to plead ignorance that I have not been able to read this budget, and I would like to place it on record that it is humanly possible to read this budget. और इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा है, बजट उसका एक माध्यम है, तो जो एक सार्वजनिक जानकारी है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर, उसके बारे में मैं अपना वक्तव्य इस सदन के समक्ष रखूंगा। मैंने बहुत जल्दी से कोशिश की कि जो माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको पढ़ने की कोशिश करूं। उनके बजट भाषण के 35वें सफ़े पे जो पैरा 13.1 है, उसमें वो कहती हैं कि द बजट 22-23 फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल फोकस ऑन गुड गवर्नेंस, deepening grassroots democracy, accelerated development and inclusive growth, facilitating investment and industrial growth, infrastructural development for improving quality of life and employment, youth initiatives and women empowerment, and broadening social inclusion. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अच्छे अल्फाज हैं, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली नोबल सेंटिमेंट्स। पर जो जमीन की हकीकत है, जो जमीनी परिस्थिति है, वो जमीनी परिस्थिति कुछ अलग है। इस सदन में 6 अगस्त 2019 को जब ये फैसला हुआ कि धारा 370 को हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर राज्य, जिसकी संरचना वर्ष 1822 से लेकर वर्ष 1846 के बीच में की गई, उसका विभाजन कर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, तो सत्ता पक्ष के तरफ से 2 दलीलें रखी गई। पहली दलील ये रखी गई कि इस प्रक्रिया से जम्मू और कश्मीर का जो भारत के साथ विलय है वो और सुदृढ़ होगा, द स्टेट विल बी इमोशनली इंटीग्रेटेड। और दूसरा जो उद्देश्य बताया गया, इससे जम्मू और कश्मीर में जो विकास का कार्य है वो और तीव्र गति से होगा। आज 33 महीने हो गए, और इन 33 महीनों में क्या ये जो दोनों लक्ष्य हैं, इसको पूरा करने में सरकार सफल हो पाई है? और मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उसका जो जवाब है वो ना में है, और मैं उसको प्रमाणित करने के लिए इस सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आज भी जम्मू कश्मीर में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है वो चिंताजनक है, और जितनी परिस्थिति 2019 में संवेदनशील थी, 2022 में भी स्थिति उससे ज्यादा ही असंवेदनशील है। जम्मू कश्मीर एक सरहद का राज्य है, और सरहद के राज्य में जो सरहद पे होता है उसका असर सीधा सीधा राज्य के अर्थव्यवस्था के ऊपर, राज्य की जो सोसाइटी है उसके ऊपर पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में वर्ष 2018 से अगर आप उठा के देखिए तो वर्ष 2018 में 2936 सीज फायर वायलेशन हुए थे। 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और
प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये बढ़कर 3,279 हो गए। वर्ष 2020 में ये 5100 हो गए और वर्ष 2021 में इसके बावजूद कि पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर आम सहमति बनी, वर्ष 2021 में भी जो ये सीज फायर वायलेशन थे ये 664 थे। और मैं इसलिए ये आंकड़े सदन के समक्ष रखना जरूरी समझता हूं क्योंकि वर्ष 2004, 2005, 2006 और ऑलमोस्ट 2000 इन तीनों सालों में तो शून्य थे, पर वर्ष 2013 तक ये सीज फायर वायलेशन 100 से कम रहे थे। और ये जो आंकड़े हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल 2020 से जो पूर्वी लद्दाख में परिस्थिति है वो अत्यंत ही संवेदनशील है। चीन की फौज उन इलाकों में घुसी हुई है जिनको भारत अपनी सरजमीन मानता है और 2020 से लेकर आज तक जो परिस्थिति है वो और जटिल हो गई है क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, इमरान खान का मॉस्को जाना, इस झगड़े के बीच में 4 फरवरी को जो एग्रीमेंट साइन हुआ है चीन और रूस के बीच, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंटरिंग अ न्यू एरा, इससे परिस्थितियां पिछले और 3 साल में जटिल हुई हैं और उसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के सरहद के सूबों पे पड़ता है और मैं भी एक सरहद के सूबे की यहां पे नुमाइंदगी करता हूं। तो इसलिए इस सरकार को बहुत ही गंभीरता से बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था पे, वहाँ के वायलेंस पे, वहाँ की घटनाओं पे, उस पे जो उनका बयान आ रहा है वह बयान सही नहीं है, गलत है। आप हम नहीं बिल्कुल। और दूसरा कि अभी इसी सदन को अवगत कराया गया है फर्स्ट सिटिंग में कि क्या वहाँ की स्थिति है, इसलिए एक क्वेश्चन था और विपक्ष का क्वेश्चन था। तो आपको मौका मिलेगा ना, आपको मौका मिलेगा। अगर आप मेरे वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखते आपको मौका मिलेगा, अब रिबट कर दीजिएगा। लेकिन बीच में जो गलत आंकड़े दे रहे हैं जिसको सदन में चेयरपर्सन सर, सही आंकड़ों से Mr. Chairperson sir, I find this incredible that minister after minister is standing up and interrupting. Does a member not have the right to be able to articulate what he says in this house? Have they not read Article 105(2) of the Constitution? Are they not aware of the privileges which members of Parliament have? I mean, I find this to be highly objectionable. That you are not even allowing me to say, as a member of this house, what I have a constitutional right to say. Hey, what? आप कहिए, please. Supriya ji is saying that I should be flattered that all ministers are replying to me. So in that spirit, I will continue my. This is a privilege on the part of a member that the ministers are intervening. It's a credit on you. So मैं अध्यक्ष जी बहुत ही जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि 2019 में जो कदम उठाए गए उससे जो भारत की सरहद के ऊपर परिस्थिति है वो सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई कि उसके ऊपर जो चिंताएं हैं भारत की वो बढ़ी है। ये एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील सवाल है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको जरूर अपने संज्ञान में रहे। दूसरा सवाल मैं अध्यक्ष जी उठाना चाहता हूं, जो आज मैं सुबह एक सरकारी आंकड़े पढ़ रहा था और उस वक्तव्य में ये लिखा था कि 70% जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए उनको मार गिराया गया। 70% of those locals who had joined the militancy were neutralized. पर जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय ये है कि क्या वर्ष 2019 से जो लोकल नौजवानों का इस आतंकवादी गतिविधियों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि क्या वो बढ़ी है?
और अगर बढ़ी है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जरूर इसको बहुत ही गंभीरता से अपने संज्ञान में ले। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि इस सदन में 8 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और 18 अक्टूबर 2020 को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड का जो विषय है उसके ऊपर जल्द निर्णय होगा, जल्द फैसला होगा। आज हम मार्च 2022 में हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में 2019 में दिया या उसके बाद कई बार माननीय गृह मंत्री ने दिया, सरकार उसके ऊपर कब अमल करने जा रही है? कब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने जा रही है? इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, आजकल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। वहां पे नए विधानसभा के क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस प्रक्रिया से वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है और एक ये आम बात है कि राजनीतिक पार्टियों को उस सारी प्रक्रिया में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसके साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आरक्षण की वजह से कहीं ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जो लोग आरक्षण से बाहर हैं वो कंप्लीटली अनरिप्रेजेंटेड रह जाए। और इसके अलावा एक चीज मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश की संरचना में महाराजा रंजीत सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था। 1822 में उन्होंने राजतिलक किया था राजा गुलाब सिंह जी का, तो इसलिए वहां पे जो सिख माइनॉरिटी है उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रावधान देने के लिए, जैसे यहां पे एंग्लो इंडियंस को हम रिप्रेजेंटेशन देते थे, क्योंकि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल रही नहीं, तो क्या जो वहां पे सिख माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी को आप उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व देंगे, कुछ सीट्स को वहां पे रिजर्व करेंगे? इन मुद्दों के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। अब मैं वहां की इंडस्ट्री के ऊपर आता हूं। एक बात जो कही गई थी कि जब धारा 370 हट जाएगी तो बाहर से बहुत सारे निवेशक आएंगे और जम्मू और कश्मीर में उद्योग लगाएंगे, जिससे वहां पे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुए हैं उसके हिसाब से अभी तक 99.9% जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की याचिका दी है वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। The moot point being, there is negligible interest by investors outside Jammu and Kashmir for investing in that state. अब आप स्टेट की इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए, और मैंने ये आंकड़े सदन के समक्ष एक बारी पहले भी रखे थे कि कश्मीर में तो इंडस्ट्री है नहीं। जम्मू में जो 3 जिलों में इंडस्ट्री थी, जम्मू, सांबा और कठुआ, उसमें से जो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे 12,997, उसमें से 5,890 काम कर रहे हैं और 7,107 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो चुके हैं। और अध्यक्ष जी, ये बहुत चिंता की बात है कि अगस्त 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पहले 4 महीने में ही जो ह्यूमन राइट्स इन जे&के करके एक संगठन है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। और अगर जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को आप संज्ञान में ले, पहले 120 दिन में 17,877 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन और हैंडीक्राफ्ट्स, जो बेसिक इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं ये सारी बातें सदन के समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन पिछले 3 वर्षों में
जम्मू कश्मीर एक बहुत ज्यादा ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है। चाहे आप इंटरनेट शटडाउन्स की बात कर लीजिए, 5 अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक 2213 दिन इंटरनेट बंद रहा। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 100 बारी इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जम्मू कश्मीर का पूरे अगर भारत को संज्ञान में ले तो उस मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा स्कूल बहुत सारे दिन वहां पे बंद रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है अध्यक्ष जी कि जिस विचारात्मक उद्देश्य को लेकर यह सरकार अगस्त 2019 में चली थी कि आर्टिकल 370 को, धारा 370 को धराशायी करके और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू और कश्मीर का विकास, तरक्की, उनके नौजवानों को रोजगार, उनके जो इंडस्ट्री है उसकी खुशहाली होगी, क्या उन उद्देश्यों में सरकार सफल हो पाई है? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो मैंने थोड़े बहुत आंकड़े देखे हैं, जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री ने, उसमें जो प्रशासनिक बजट है, प्रशासनिक बजट में से 73% पैसा होम डिपार्टमेंट पे खर्चा रहा है। तो अगर 73% पैसा आप सुरक्षा पे खर्च रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि जो परिस्थितियां हैं वो सुधरी नहीं है। मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद मिस्टर मनीष तिवारी जी। नाउ श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। जम्मू कश्मीर पर जो आज चर्चा हो रही है, जिसमें बजट भी शामिल है, मैं वित्त मंत्री जी के इस प्रस्ताव के साथ सहमत हूं और इसके पक्ष में खड़ा हूं। महोदय, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के रहते और धारा 370 की आड़ में शक्तियों का दुरुपयोग होता था। लोग, नौजवान नौकरी लेने के लिए सत्ताधारी मुखिया जो लोग रहते हैं उनके घरों के चक्कर काटते थे, रिश्वतखोरी का धंधा चलता था और लोग दरबदर होते थे। जहां पर जो विकास के लिए पैसा जाता था वो विकास पर ना लगते हुए इन्हीं परिवारों के आंगन के विकास में लगता था। और जो प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गया तो कई सालों तक वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म नहीं होते थे। लेकिन मैं महोदय बताना चाहता हूं कि आज नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में योग्यता के अनुसार रोजगार जो है वो प्रदान किया जा रहा है। जो पैसा विकास के लिए जाता है, जिस प्रोजेक्ट के लिए जाता है, उसी प्रोजेक्ट पर लगता है। और जो वर्षों पुराने प्रोजेक्ट अदर में लटके हुए थे वो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। नए नए प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू हुए हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग मापदंड जो थे वो अपनाए जाते थे। जम्मू प्रोविंस जो है उसके साथ भेदभाव होता था और कभी भी अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो उसे लेने के लिए जम्मू प्रोविंस के लोगों को धरने, प्रदर्शन, एजिटेशन करना पड़ती थी। उसके बाद मिले ना मिले वो भी कोई पक्का नहीं होता था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर
का पूर्ण विकास हो रहा है और सामान्य विकास हो रहा है, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। और विशेष तौर पर अगर मैं कहूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर के बाग खुल गए हैं और जम्मू कश्मीर में विकास की गति जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और सामान्य रूप से कश्मीर घाटी हो या जम्मू प्रोविंस हो, सामान्य रूप से विकास जो है वो आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो नारा सबका साथ सबका विकास, वो कारगर सिद्ध हो रहा है और विकास भी चहुमुखी विकास जो है वो हो रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाते हुए आपको बताऊं कि जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों के उन्हें वर्षों तक नहीं मिले, वो अधिकार अब जाकर नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है वो अधिकार उनको मिले हैं। जो अधिकार उन्हें वर्षों पहले मिल जाने चाहिए थे। मैं डीडीसी की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और बीडीसी के जो चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में पहली बार ये लोगों को अपने अधिकार जो है वो मिले हैं और 3 टायर सिस्टम जो है उसकी स्थापना हुई है। पंचायतों को भी अधिकार मिले हैं। अब पंचायतें मिल बैठकर अपनी पंचायत का विकास कैसा हो, इस पैसे को किस तरह से लगाया जाए, उस तरह का विकास जो है वो जैसे वो चाहते हैं वैसे अपने विकास के लिए चर्चा करते हैं और वही विकास करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि पुरानी सरकारों का दबदबा, परिवारवाद जो है वो अब खत्म हुआ है, स्वार्थ की राजनीति जो थी वो भी खत्म हुई है। लेकिन महोदय, मैं इसके साथ कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर कोरोना काल में जो सराहनीय कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ना होते तो इस कोरोना काल में देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर का क्या हाल होता। लोगों को आज वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है और विशेष तौर पर वो जो गरीब लोग थे उन्हें फ्री में राशन भी जो मुहैया करवाया गया, ये बहुत बड़ा कदम जो था और सराहनीय कदम है। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्टों की चर्चा ना करते हुए सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज एम्स की बात करो, आईआईएम की बात करो या रिंग रोड की बात करो, नेशनल हाईवे की बात करो, जम्मू एयरपोर्ट की बात करो, ये सारे कार्य जो हैं अब धारा 370 हटने के बाद जो है वो शुरू हुए हैं और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब लोगों को कोई शिकायत नहीं है। विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोग भी खुश हैं कि जैसे कश्मीर घाटी में विकास हो रहा है वैसे ही जम्मू प्रोविंस में भी विकास हो रहा है और जो पैसा आता है जिस प्रोजेक्ट के लिए आता है उस प्रोजेक्ट के लिए लगता है। और विशेष तौर पर जम्मू का जो एयरपोर्ट था, बहुत बड़ी दिक्कतें इसमें हमें आती थी। आज यहाँ पर नाइट सर्विस जो है वो भी चालू हो गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन का विकास जो है वो जोरों पर चल रहा है और जम्मू में चारों ओर सड़कों का जाल जो है वो बिछाया जा रहा है, नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करूं, जो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। रिंग रोड की बात करूं, पुरानी मांगों को लेकर भी बड़े सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिनको मंजूरी मिली है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और तेजी के साथ विकास हो रहा है। जम्मू शहर के आसपास और जम्मू शहर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य जो है वो किए जा रहे हैं और फंड्स भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और विशेष तौर पर साबरमती नदी की तर्ज पर जम्मू तवी का विकास हो, चाहे रोपवे प्रोजेक्ट की बात में करूं और इसके साथ साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ में उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों बीडीसी जो विलेज डिफेंस कमेटी थी, आज उनको विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उनकी जो बड़ी पुरानी मांग थी उसको भी पूरा किया गया है। उनको सही मानदेय मिले उसकी भी चिंता की है। इसके अलावा भी आईआरपी की बटालियनें खड़ी की जाएं, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हुई है। शहर में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो उसके लिए भी
जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से, या फिर इसके अलावा भी कई कार्य किए जा रहे हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में भी कई सारे ऐसे बड़े प्रावधान जो है वो रखे गए हैं, उन सब की मैं चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन कई हेल्थ सेक्टर में हो, यहाँ पर 29 क्लस्टर मॉडल गांव स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं एक एकलव्य मॉडल जो बोर्डिंग स्कूल जो है उन पर काम चल रहा है। और यह बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी विकलांग लोग हैं उन सबको जो 3 पहिया साइकिल जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर शहरों के विकास के लिए 3112 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। ये अच्छी बात है, पिछले बजट से भी ज्यादा, और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा भी महोदय कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है, और विशेष तौर पर जल जीवन मिशन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बहुत बड़ी राशि जो है वो जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई है, ताकि हर घर जल जो है वो पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी काम हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से भी कुछ कार्य जो है वो किया जाए। कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छूट गए हैं, मैं चाहता हूं कि उन पर भी थोड़ा गौर किया जाए, और वो पोर्टल जो इस समय बंद है उसे खोला जाए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के माध्यम से वहां पर भी कुछ लोग जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकें। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी जहां बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, कर्मचारी हैं, जो वहां पर अपनी सेवाएं जो है विभिन्न विभागों में दे रहे हैं, और विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं वो नीड बेसिस है और अड़ाक बेस पर काम करते हैं, और वो रोजाना धरने प्रदर्शन करते हैं। कारण एक ही है कि उनको जो सही मानदेय जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि ड्यूटी प्रशासन का आर्थिक सहायता करें, ताकि ये जो कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए, और ये अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकें। और ये एक बड़ी बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है, लेकिन उपराज्यपाल महोदय इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों 12,000 कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है। यह बहुत बड़ा एक सराहनीय कार्य है, लेकिन यह क्रम जारी रहे उसके लिए जम्मू कश्मीर की मदद जो है हमें करनी होगी। मनरेगा के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहुत बजट भी आपने रखा है, लेकिन 17-18 और 16-17 की कुछ काम ऐसे हुए हैं जो किस वजह से उन लोगों को उनका पैसा उनको नहीं मिला, ये उनको मिलना चाहिए था। वो लाइबिलिटी एक खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन पर, वो बकाया राशि जो है वो उनको दी जाए जिन्होंने वो काम किए गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए भी आर्थिक सहायता जो है वो ड्यूटी प्रशासन की जाए। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इस माध्यम से बहुत अच्छे ब्रिज और रोड वहां पर बन रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण वो जो पैसा थोड़ा कम पड़ गया। अब ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रुक गए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हालांकि केंद्र अपने ड्यूटी प्रशासन ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ले लिए हैं, उन्हें किसी और हेड से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी प्रोजेक्ट हैं जिन पर जो है सीआरएफ के माध्यम से पैसा नहीं गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो पैसा भी रिलीज किया जाए। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहूं तो रोजमर्रा ही हमारे पास लोग आते हैं, जोड़ियां इंद्री पत्तन टू प्रगवाल एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होगा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी पैसा जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। और सांबा सुंब रोड और ऐसे कई ऐसे रोड और ब्रिज हैं, यहाँ काम रुका पड़ा है, जिससे कि लोग जो हैं वो दुखी हैं। मैं जानता हूं कि जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ रोड जो है बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और वो जो एक 250 किलोमीटर का फासला था वो अब 190-92 किलोमीटर का रह जाएगा। वो सफर जो 7 घंटे का था वो अभी 3.5 या 3 घंटे तक सीमित रह जाएगा, और सारे लोग आराम से चल सकेंगे, जा सकेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो काम चल रहे हैं ये चलते रहे, ये जल्दी से संपन्न हो, लेकिन इसके साथ साथ ही वो सारे कार्य जो रुके पड़े हैं वो भी जल्दी से आगे बढ़े। कुछ आईआरपी की बटालियन ने वहां खड़ी करने की बात हुई थी, कुछ बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें पास भी हुए, उनके अभी रिटर्न होने थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि
उन बच्चों को भी थोड़ी रियायत दी जाए जिन्होंने वो रिटर्न पास किया है। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र पर आप बटालियन खड़ी करने जा रही थी, बहुत बड़ा योगदान जो है वो रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के लिए केंद्र सरकार ने दिया था। उन बच्चों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, उनको भी मौका दिया जाए और नए जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जो बीडीसी के लोगों के लिए आपने किया, उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। यहाँ पर हमारे मनीष तिवारी जी जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि सीमा पर हालात कुछ ठीक नहीं है। मेरा पिछले दिनों सीमावर्ती क्षेत्रों का जो है वो दौरा हुआ। मैं पुंछ, राजौरी और नौशहरा सेक्टर में भी गया और सीमावर्ती क्षेत्र में गया। वहां सीमा पर रहने वाले जो लोग हैं आज अत्यंत खुश हैं। वो बहुत ही खुश हैं कि आज सीज फायर का पूरा पालन हो रहा है और वहां पर लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़कर मजबूर नहीं है, अपनी खेतीबाड़ी भी कर रहे हैं, रोजगार भी चला रहे हैं और अपने घरों में ही रह रहे हैं। रही बात डिलिमिटेशन की, यहाँ पर डिलिमिटेशन के बारे में कहा गया, वही पार्टियां नाखुश होंगी जिन्होंने शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यह भेदभाव पहले होता रहा है, आज वो भेदभाव जो है वो नहीं हो रहा है। आज सामान्य रूप से जिसका जो हक बनता था डिलिमिटेशन ने उसे वो हक दिया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खुश हैं कि पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा इंसाफ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया गया है। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Sri Saugadraj ji. Sir, I rise to speak on the Jammu and Kashmir budget. The budget is roughly about 1 lakh, expenditure is 1,12,000 crores, of which capital expenditure is 41,000 crores and revenue expenditure is 71,615 crores. This is a budget for bureaucratic expenditure. And as you know, sir, the expenditure is mainly on home, police, on which 9,588 crores are being spent. Now let me first start by saying that I was opposed to abrogation of Article 370 and I am still opposed to it. It was a wrong step for which the country will have to pay in future. I think apart from fulfilling BJP's agenda, it had no other meaning. The finance minister in a speech has mentioned the concept of one nation, one constitution and one flag has been adopted in the Union. This was Shama Prasad Mukherjee's slogan. Ek Nisan, Ek Vidhan. He was a good man, died unfortunately in Kashmir. But his slogan is being implemented by his successors. Presently, Srimati Nirmala Sitharaman. You have read a budget. What is the meaning of this budget being read in Parliament? Why could not Jammu and Kashmir's elected representatives, their finance minister, give this budget? What is there in this budget of Nirmala Sitharaman that representatives of Jammu and Kashmir could not speak on? This is deprivation of the people of Jammu and Kashmir, their rights to have their own government. I am totally opposed to this undemocratic step. Sir, one gentleman called Mr. Kakru, he has written in the Kashmir Times about the situation today in Jammu Kashmir. The per capita income in J&K is recorded less than average Indian. The literacy rate is recorded below the average in India. The unemployment among educated persons is recorded 22% against 7% in India.
the electricity available to public for domestic purposes is this month. ये मेरा नहीं, ये तो अभी Kashmir Times 2/3/22 is written by a Kashmiri. He's mocking you by saying that it's only 2 years since the accident. He's mocking you. No, आपको तो पोस्ट मिला है प्रोफेशनल हेकलर का, हम लोग ऑफिशियली दे देंगे, प्रोफेशनल हेकलर मिस्टर निशिकांत दुबे, ठीक है। तो सर, आई वांट टू आस्क, व्हाट इज द finance minister seeking to achieve through this budget? Now let me also say that this budget is basically a revenue budget. Only 37% is capital. 63% is revenue. That means salary, establishment, similar expenditure. इससे तो Jammu and Kashmir will not change. See what Jammu and Kashmir people have to say about this. Sir, I was just reading some statement. The Jammu and Kashmir Chamber of Commerce, they said that budget has nothing significant for trade and industry. It's a big disappointment for traders and industrialists who are under mounting pressure due to restrictions and continuous setbacks in the last 2 years due to pandemic and its related problems. The government has announced certain benefits for overall development of the country. But what is missing in the budget is a big announcement for marginal traders He's not yielding. who were hit by the pandemic and expecting a relief from the Modi government. Sir, one opposition party in Jammu and Kashmir has said that this budget does not address the rising unemployment and unprecedented prices of all essential items of regular use. Due to lack of spending capacity, Saugadrai economy. Have I said anything wrong? are you yielding? Are you yielding? No, I'm not yielding at all. I'm yielding, not under what yielding rule? at all. No, sir. What rule? Let him speak after me. Sir, you give him, he is the professional heckler put up by the BJP to disturb anybody who speaks against them. Sir, Tagore का एक पोएम है. Yes, I will. भय करे तो वो भय के नो तो जाए ना. No, his point of जीतने के बाद भी no. Saugadrai his point. Saugadrai his point of order was in 349(1). Shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. This is absolutely the business of the house. No, business of the house क्योंकि बजट आज पेश हुआ है सर, और वो बजट को कोट कर रहे हैं कि इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा, इस पार्टी ने ये कहा, बजट तो आज पेश हुआ ना, वो न्यूज़पेपर में कैसे छप गया सर? इसका मतलब ये पुराना स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं. Factually correct or incorrect is not a matter of concern. Whether it may be correct or wrong. नहीं, बिजनेस ऑफ द हाउस नहीं है ना सर, बिजनेस ऑफ द हाउस बजट है आज का, और बजट आज पेश हुआ है सर. See, what he is reading. Nishikant Dubey, what he is reading is with me also. This is from the library. This is from the parliament. तो बजट तो वो गलत है ना सर, वो पुराने साल का बजट है ना, या भारत सरकार का लास्ट ईयर का है ना सर. बजट तो आज पेश हुआ, वो अखबार में कैसे छपेगा सर? No. Yes, please continue. और यदि लीक I'll carry on, sir. Sir. No, Now, he is. Sir. Ek second. He is reading about the budget just announced in the 1st February, in which allocation for Jammu Kashmir has already been stated that 35,000 something crores have been allocated, in which the trade and industry people have stated. He is quoting that. What is the point of order in it? I do not know. Yes, please continue. I do not know. Any single point of criticism, BJP is on a roll. They think that any single criticism must be opposed. That is why they'll receive kudos from Mr. Modi. That, yeah, well done, boys. For all this is an effort to attract his attention. Yes, sir, please. Now come to the subject, please. Now, slowly. Sir, Jammu and Kashmir, I remind you of Sheikh Abdullah.
he formed the National Conference in Jammu and Kashmir Conference in 1931. One of the main jobs of Sheikh Abdullah was to lead the movement for land reforms in Jammu and Kashmir. Later, he was such a nationalist that later Jammu and Kashmir National Conference converted to National Conference. And I pay my tributes to Sheikh Abdullah, who always stayed in the national mainstream. The country did not treat him well, but he never deviated from the path of nationalism. Now, what is the problem from outside? We go as tourists to Jammu and Kashmir. We take a shikara ride on Dal Lake. We go to Pahalgaon and we go to Gulmarg. We go up the skiing slopes of Gulmarg. But the people of Jammu and Kashmir remain poor because there is not so much scope for employment. Land is limited. Even after land reforms, people have not received. The other thing is handicrafts. That is solely dependent on tourist inflow to Jammu and Kashmir. Now, what has the government successfully done to improve agriculture? And the other is floriculture, olericulture, pomology, that is development of fruits, vegetables and flowers. Now, how much Philip has these things received? The point is, the point Mr. Amit Shah made in this house, I remember that very clearly that day. He said, we'll control militancy. We'll bring Jammu and Kashmir into the national mainstream. Now, there is this young minister, I have got a speech by him. He has given me a reply. He has given me a reply only in the month of December, see Nityanand Rai, young minister. He said that I mentioned the death of armed police personnel in J&K. On 13/12/21, a police bus carrying police personnel was attacked by terrorists. 15 police personnel got injured, among them 3 died. Further, on 10th December, some terrorists fired upon police station Bandipura. In this incident, 2 police personnel received injuries. Again, 2 terrorists responsible for the incident have been killed. He said that government has adopted a policy of zero tolerance. But you know what is happening in Jammu and Kashmir? I have got a very nice report, sir, which says that J&K drop in law and order in sir. I read from his letter. He has नाम लिए इसलिए उस पर एक यही होता है. हाँ, मैं वही पे जो आप बोल रहे हैं उसी पे कर रहे हैं. मेरे जवाब का एक पार्ट बोल रहे हैं. सही तथ्य जो पुलिस पे अटैक, अच्छा हमको क्या, हमारे उनको पूरा जवाब पढ़ना चाहिए. आंकड़ों को हमने दिया है. मेरा कोई काम नहीं है. पार्ट यह भी था कि हमारे जवानों ने हमारी जम्मू पुलिस के साथ मिलकर सीआरपीएफ और मिलिट्री ने कितने आतंकवादियों को मारा है, वह भी आंकड़ा उसी में है. तो जरा कृपया अगर पढ़ें तो बड़ा. अच्छा, आतंकवादी सर, लोगों को मानने में क्रेडिट सर. आतंकवादी को मैं बोल रहा हूं सर. आतंकवादी कितने आतंकवादी मारे गए हैं उसकी बात मैं कह रहा हूं. सर, ये मंत्री जी को जो धीरज जिसको कहता है, पेशेंस कम है, उम्र कम है, इसलिए मैं उनको माफ कर देता हूं. हाँ. यह है कि मैं गलत चीजों को सुनना नहीं चाहता हूं. धैर्य तो पूरा है, लेकिन हमारे जवानों ने, इस देश के पुलिस जवानों ने, मिलिट्री ने, सीआरपीएफ ने किस प्रकार से आतंकवादियों के सफाई में लगे हैं, उसको भी तो इनको कहना चाहिए, गर्व करना चाहिए इनको उस पे. यस सर, आई एम नाउ स्लोली वाइंडिंग अप. यस सर, very important report. J&K, drop in law and order incidents
Please. Sir, listen to this. Please. But uptick in militant recruitment. क्या हो रहा है? Gogoi, please. Sir, what is happening in J&K? That incident, huge number. You have posted 3 lakh army personnel in J&K. You've got huge CRP, BSF, CISF, and the works. So incidents have become a few less. But what is worrisome is there is an uptick in militant recruitment. Sir, between January and December 2020, 225 militants were killed by security forces. 19 in Kashmir, 13 in Jammu. Sir, but the improvement in terms of, on counts of terrorism, there are more people joining the militants every day. This is happening why? Because there is no democracy, functioning democracy in Jammu and Kashmir. They say that we have held the panchayat election. Every other day, sarpanches are being killed by terrorists. Sarpanches do not come out of their houses. So the promise made by Amit Shah that Jammu and Kashmir will improve significantly has not been redeemed. Yes. Sir, I end with saying that you must. Nirmala ji, I know, is not the boss in this matter. Amit Shah is. She has only brought the. She has only brought the budget. But Jammu and Kashmir must have elections, assembly elections at the earliest. This excuse given that we are doing delimitation, that's a bogus. Yes. That's a bogus excuse. You must have elections to the assembly in Jammu and Kashmir. You must have a proper representative government in Jammu and Kashmir. And the way to win away militants from the young people from the path of militancy is to give them the offer of participating in open election and also in giving them jobs. Unemployment is the biggest problem in Jammu and Kashmir. Development is the biggest problem in Jammu and Kashmir. And this government had significantly, signally failed in providing unemployment, employment and jobs to the people also in ensuring development. They talk of big projects, sir. We'll build a road from Katra to Amritsar. We'll build a road via Jojila Pass to Ladakh. We'll build a road to Pahalgaon. No, that's not enough. Jammu and Kashmir live in small, small hamlets. Whether those hamlets are connected. That's how. And I want to ask them last of all, what happened to your promise of rehabilitating Kashmiri Pandits in the valley? They have not re-established one single Pandit family in the Kashmir valley. This is all talk. Ek nishan, ek vidhan. ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्लोगन उसी का बजट है. That's why I oppose the budget. Thank you. Thank you, Saugata Rai ji. Sri Srinivas Lureddy ji. Thank you very much, sir. Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on this issue. The YSR Congress Party has always reposed our trust in the wisdom of Honorable Prime Minister and the Home Minister to bring Jammu and Kashmir closer to Delhi and the rest of the country. To a large extent, sir, this has been achieved. The expediting of connectivity projects like Chenani-Nasri Tunnel and Navigo Tunnel has ensured this bridging doesn't remain mere talk, sir. Sir, it was a dream actually, sir, for all the South Indians, whether we can go to Srinagar or Leh, Ladakh or Pahalgam. But after the abrogation of Article 370, our Honorable Prime Minister and Honorable Amit Shah ji has brought the dream into true. That's why actually, sir, in my lifetime I have not gone to Kashmir any time.
But no, sir. I went, 2 months back, on a committee tour. So it was, so attractive that, people have missed. I have missed for a long time. And that I've been, actually educating all the South Indians to go and visit, Srinagar, or Pahalgam, or Leh and Ladakh, sir. So now the development we are seeing there in that place, a lot of development is there. But actually, for the tourists, budget tourists, we'll have to promote there, sir. When we have gone there to that place, all the airports are also filled with the passengers, and the railway stations also filled with passengers, and bus stations also. So that now, due to COVID, for almost 1.5 years, sir, the tourists they could not able to go to that place. Now it is actually slowly increasing and booming. The employment locally also, sir, it is people are getting employed there for all this because activities now. And my request to you, sir, to you also, to our Honorable Finance Minister, the budget tourists have to be encouraged, sir. It is not the luxury tourists. There will be only few people only can afford to go there means. It is not, the Kashmir has been shown to the entire country, sir. The foreigners, a lot of foreigners also have been coming also here to this place. Sir, I request through you, sir, Honorable Finance Minister, here, actually, sir, very shortage of, power is there. Even though, Ratil and Kiro hydroelectric projects, have been actually sanctioned, only, 500 crores have been given also for this Ratil and Kiro. Ratil projects, sir, about 820 megawatts, sir. Otherwise, 6,500 crores, JK and Jammu and Kashmir government is paying also for buying the power, sir, into the state. Sir, unemployment, as my boss, my Saugatraji, Dadaji has told also, sir, that unemployment is there. There is no doubt about it. Because all these years, the development used to be there, but the development is to be a structural development, not a concrete development. Now I request to you, sir, Honorable Finance Minister and Home Minister also, sir, the employment potential is there. If they go on and develop also, the industrial development is required, sir. Sir, especially if you see that weavers community, sir, you know pretty well that Kashmir shawls are very famous also. And Kashmir shawls, now, for weaving that also, sir, hand woven, people are there. But especially if you see that also Pashmina shawls, very famous Pashmina shawls are there, sir, available. But there is no actually, sir, support from the central government or state government there for the weavers, sir. That is very much required, sir, so that it has got an international market, sir. Then only local people will get employment, and it will give also revenue, sir. Not only that, sir, if you see that budget lands also, local revenue, own revenue is very, very less, sir. Center is supporting a lot actually for this J&K. How long you can support that also? Unless you develop locally the potentiality to earn the revenues, everything, then it is not possible for anybody also to support for a long time, sir. Sir, locally now, all these irrigation projects have to be also. So we are happy to know that also, sir, MOUs have been executing also Uri, Dulhasti and Savalkot projects, sir. When these projects come into the action, then only the power also generation also can be done. See, altogether it's a cycle actually, sir, even though it is spread over longer areas, sir. J&K is not a small. It's the head of the country. It's a prestigious place also for anybody. And we don't want to see, only in films, sir, the Srinagar and all these places. We want to show the reality. That means, you have to encourage the tour operators to, actually, all these, our committees, have been, sent to J&K. Actually, this marketing also have to be done in a big way, sir. Tourism should take it up, sir. Sir, I must tell you, sir, this year, two substantial allocations have been made to the Ratil and Kiro hydroelectric projects in the budget. It is compatible, sir. It is very much required also to do that. But as a member of parliament from Andhra Pradesh, I like to point out, sir, the disappointing parallel with respect to allocations made for the Polavaram project, sir. The Polavaram project being a mega project with a capacity to generate 960 megawatts, said to be one of Asia's largest projects, sir, have been allocated a paltry 320 crores in 2022-23 by the Jal Shakti Minister, sir. I would like you also to convey it to the Honorable Finance Minister. This also has to be looked in, sir. And JK, sir, J&K is, because, sir,
my initiatives, the tourism industry is very much also, as I told, sir, budget to tourists have to be attracted there. That 786 crores have been allocated also for this state. But actually, now the 786 crores, in what form it is going also has to be also highlighted to all the members, sir. Then only, it can be seen. Sir, funds for reviving Nagdin Dal Lake have been made in 2022, which will create a more conducive tourism ecosystem in Srinagar, sir. Sir, not only that, Dal Lake has to be encouraged, it has to be, maintained very clearly, sir. The ecosystem is very much required, and meager funds are not required, sir. Once for all, you have to create a big atmosphere there so that you can attract a lot of tourists, sir. And other efforts to improve the crowd management, Vaishnav Devi famous temple, sir. The temple, lakhs of people are also visiting the temple, sir. Some facilities have to be increased there in that place. But, during the 2-3 months period, heavy rush will be there, but pilgrims will not be provided also with much facilities, sir. Sir, the approved development new trekking routes in various wildlife protected areas in a good move, and sustainable ecotourism should be promoted to help domestic and international tourists discover the beauty of the atmosphere. Sir, it is no wonder that 80,000 tourists have already visited J&K in the 6 weeks since the reopening of the Omicron, sir. Sir, as our colleagues have mentioned about Kashmir Pandit, sir, post abrogation of Article 370, less than 1,000 Kashmiri Pandits have returned to Kashmir for taking up the jobs that have been provided to them under the rehabilitation package framed in 2015, sir. Sir, the policy is not wholly sufficient to ensure rehabilitation and permanent rehabilitation facility. We are marking the budget for their settlement process, as most of them are still living in camps for the 32 years, sir. Sir, the initiative of making the Srinagar National Highway and Express Highway is a good move. There has been a doubling of the blacktopping and mascading of roads in J&K in the last few years, sir. Sir, this government is doing a lot for J&K, sir. I would like to know, because Lieutenant Governor has pointed out that investment proposals of 25,000 crores have been received. We have hope all these facilitated into actual investments on the ground, sir. Sir, my last request to you that also, sir, the roads have to be developed, sir, there in that. See, in the Central Road Fund, only 94 crores have been allocated to Jammu and Kashmir, and only 16.4 crores have been released, sir. I request you to increase more also there in that, sir. Sir, I'm going to tell you one more thing, sir, which my colleague has told. Kashmiriyat, Insaniyat, and Jamhuriyat will be realized when the peace is quickened on achieving delimitation, sir. Sir, thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Srinivas Rurudi. Now the Honorable Minister, Sri Jitendra Singh, would like to intervene. Please. Thank you. Thank you. But next time I'll certainly present one to Dada. Yes, Minister. But Dada, next time I'll present one to you. Thank you, respected Speaker, sir. I think in the last couple of minutes, the most amusing part of this discussion is that we are virtually discussing everything but the budget. But nevertheless, I'm glad at least Dada hinted out to the amount of the budget that is going to be allocated for Jammu and Kashmir. But since I said everything else has been discussed but the budget, so I think sensing the sense of the House, some of those points also need to be responded. Dada is our senior, our guru, a veteran. But Dada, forgive me, I thought you were a reasonable Bengali intellectual. Yeah, I still believe. But, and yes, I appreciate you mentioned our founding member, Sama Prasad Mukherjee, in complimentary terms. But you would also appreciate that, and you also refer to the slogan, the mantra given by him, Ek Vidhan, Ek Kisan, Ek Pradhan.
And you would also appreciate, like a good Bengali, when Sama Prasad Mukherjee gave this mantra, there were virtually no takers around. But he followed the dictum of another great Bengali, the son of Bengal, Rabindranath Tagore, कि जादे तो रिडक्शन चले एकला चलो रे, जादे तो रिडक्शन एक इन अच्छे तो बे एकला चलो रे. So I belong to an organization which has a rich legacy connected to the land to which Sama Prasad Mukherjee belonged. But what I was little confused when Dada suddenly took a turn and said that all this is being said to appease the Prime Minister so that he says good boys. So, no, but what I'm trying to say is, Dada, you reminded me of Rabindranath Tagore's poetry. Just now which I mentioned, Ekla Chalo. And you also reminded me of Shakespeare when you said that. A2 Brutus, Julius Caesar. I thought Dada also talking like that. So in your brief discourse, you have taken me from Tagore to Shakespeare. But my moot question, before I respond to some of the points, is our friend Manish ji is not there. We have known each other for a very long time. We are very close to each other. And he too belongs to a border area and has faced the threat of terrorism for a very long time, including his family. I thought he would start by complimenting us that on the lines of the Wagah border, we have also started something at the Suchetgarh border, where we have similar exchange of salute in the evening. Suchetgarh border is the border. But having said that, जिस तरह से मनीष जी ने सारा सुनाया कि 5-6 अगस्त 2019 के बाद ये हुआ, वो हुआ, क्या किया, कुछ नहीं किया, और 370 अनुच्छेद हटाया, और क्यों हटाया? तो let me first begin by placing a small question. क्या कांग्रेस पार्टी ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस आज ये कहेगी कि अगर वो वापस आए तो 370 वापस लाएंगे? ये बोलो. So let's settle down this question. You don't say that because you know what the public sentiment is. So you want to beat about the bush and have it both ways. Yes, Honorable Minister, please address the chair. दूसरा, मनीष जी ने भी कहा, दादा ने भी कहा कि गृह मंत्री जी कह गए थे द स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड. ये कब होगा? शायद कांग्रेस को याद नहीं है, पंडित नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन